crucial that they understand the importance of responsible driving, the rules of the road, and the consequences of unsafe behavior. This program will equip them with the knowledge they need to not only protect themselves but also to be responsible citizens who contribute to safer roads for all. I am confident that this session will be both informative and engaging, providing our students with valuable insights into traffic safety. I would like to express my sincere gratitude to the traffic police officers for their commitment to do this cause and for taking time to be with us today. Once again, a heartfelt welcome to all, and I encourage everyone to actively participate, ask questions, and make the most of this opportunity to learn together. Let us work towards building safer roads for a better tomorrow. My dear students, as we were discussing about another important aspect of this program, today we have with us a very eminent, humble, a noble personality, Sri Immadi Buchaya Garu. He is the founder, chairman of Dr. APJ Abdul Kalam Garu. He is running so many charitable activities. He was the former chairman of Lions Club. Now he is being acting as an advisor. He is one of the founder members of esteemed Vande Mataram Foundation, which is a national, international famous organization, and is helping old age homes and is running orphanage. So in that way is doing so much of charity. He is a man of humanity, my dear students. So on my request, he came forward to distribute notebooks to our students. Today he brought notebooks with a blessing. So it is not the value of the gift. With a golden heart, he is giving notebook with a blessing to all of us, our students. It is a great opportunity for our students, sir. Definitely they will come up with flying colors. It will help them in their bright future. Thank you for accepting our invitation, and he is distributing notebooks, my dear students. And above all, he set an example for the society. Today, most of the old age parents have been neglected by their own children. So he celebrated a festival called Mother Festival. Amma Pandaga ane dani jaripindi sir. మనం అందరు దసరా దీపావళి తాగి తింటాం, మజా చేసుకుంటాం. అది కాదు నిజమైన పండగ అంటే. he gave an example for the society by celebrating Mother Festival. My dear students, our ancestors gave us great values. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atidhi Devo Bhava. Our parents, first living gods for us parents, mother and father, then teacher, then guest. These are very important for us, these four people: parents, teachers and guests. So today we have with us teachers and guests. It is our moral responsibility to treat them as God.
So that was the heritage. A warm welcome to you all. As and when we arrived at this college, the topic was regarding Sir Abdul Kalam. దో మనం అందరం కూడా కలాం సార్ అని అట్లా పిలుచుకుంటూ ఉంటాం ఆప్యాయంగా, బట్ ఐ డూ కాల్ హిమ్ యాజ్ సర్ అబ్దుల్ కలాం. సర్ రాబర్ట్ క్లైవ్, సర్ ఆర్థర్ కాటన్ అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనని పరిపాలించి వెళ్ళిన వాళ్ళనేమో సర్ అని ఈ రోజుకి గౌరవించుకుంటున్నాం మనము. వై డోంట్ వి గివ్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మాజీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, తర్వాత పిల్లలకి అత్యంత ప్రియమైన వ్యక్తి, అట్లాంటి అతన్ని సర్ అబ్దుల్ కలాం అని నేను పిలుచుకుంటూ ఉంటాను ఎప్పుడు కూడా. ఆయన పేరుకు ముందల సర్ అని యాడ్ చేసుకుని పిలుచుకుంటూ ఉంటాను. ఆయన లైఫ్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు చిల్డ్రన్. ఆయన చాలా స్కూల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో కొంచెం తెలుగు ఓకే కదా, తోడా తోడా తెలుగు. Whenever he visits any schools or colleges, when children ask him, sir, how did you become so big? How can I become like that? If the only one answer is, what he says is, dreams are not which come to you when you are sleeping. Dreams should be in such a way, or dreams should be like that, which should not let you sleep అని చెప్తారనమాట. కలలు కనేవి మనం పడుకున్నప్పుడు వచ్చేవి కలలు కాదు, మనని పడుకోనియకుండా ఉండేవే కలలు అని చెప్తారనమాట. అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ సచ్ ఎ బిగ్ డ్రీమ్స్, చాలా పెద్ద డ్రీమ్స్ ఉండాలి. వీ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ బిగ్ డ్రీమ్స్. ఆ డ్రీమ్స్ ని అచీవ్ చేయడం కోసము మనం నిద్రపోకుండా పనిచేయాలి. నిద్రపోవద్దంటే అసలు కాదు, నిద్రపోతున్నా కూడా అది మనకి గుర్తు రావాలి. రైట్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ ఏ స్మాల్ వీడియో ఫర్ యూ. ఈ లైట్లు బంద్ చేయండి సగం. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్? ఐ ఆమ్ ద చేంజ్. చేంజ్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ అస్. सब लोग बोलते गाड़ी ठीक तरह से चलाना, हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाना, सेल फोन ड्राइविंग नहीं करना, लेकिन we don't practice. The change should come from within us. So what will happen if change comes from within us? అసలు మన నుంచే చేంజ్ వస్తే ఏమవుతుంది? कोई अपना घर में कोई रिश्तेदार पहली बार अमेरिका को जाके वापस आए, सो कोई है आपका रिश्तेदार, भाई बहन बंधु कोई आए नया है अब तक अमेरिका जाके कोई रिश्तेदार? दुबई आने के बाद पहले क्या बोले? पूछो ना पूछो क्या बोलते वो लोग? कोई उठ के बोलो, अब बोलो। एयरपोर्ट में हम लेने जाते ना, उनको रिसीव करने जाते ना, कार में बैठते ही क्या बोलते हैं उन्हें अमेरिका के बारे में? Pardon? I got the right answer from here. అమెరికా నుంచి ఫస్ట్ టైం ఇండియాకి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళని మనం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అడగకపోయినా వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకి ఏమని చెప్తారు? అక్కడ చెప్తున్నావు, అరే మామా అమెరికాలో ట్రాఫిక్ ఉంటుందిరా సూపర్, అసలు ఎక్కడ పోలీసే ఉండడు కానీ ట్రాఫిక్ అంతా డిసిప్లిన్ ఫాలో అయ్యి వెళ్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. అవునా? अपन नहीं पूछे तो भी बोलता है ठीक है. अगर कोई फॉरेनर, अगर कोई अमेरिका वाले नहीं तो ऑस्ट्रेलिया वाले अपना हैदराबाद आए, एयरपोर्ट में उतरे, एयरपोर्ट के उतरने के बाद पीवीएनआर एक्सप्रेस चढ़े, इधर उधर ORR देखे, अच्छा है बढ़िया है, हैदराबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, हैदराबाद इज अ रिच सिटी, अमेरिका की तरह है बोल के सोच लेता. चलो पीवीएनआर चढ़ गया, पीवीएनआर के बाद मेहदीपट्टनम में उतर गया उन्होंने. मेहदीपट्टनम में उतरने के बाद आजू बाजू देखे तो व्हाट वुड बी द फीलिंग ऑफ हिम? इधर देखे तो सेल फोन ड्राइविंग, इधर देखे तो ट्रिपल राइडिंग, कोई रूल्स ना फॉलो नहीं करता, कोई हेलमेट नहीं पहनता, कोई रॉन्ग साइड जाता, मोस्का मंडी रोड के ऊपर आ जाता, पूरा रोड एनक्रोचमेंट, ये सब देखे तो अमेरिका से इधर मीटिंग को आए सो वाले कौन होंगे? एक कंपनी का सीईओ होंगे, नहीं तो एक कंपनी का डेलीगेट होंगे. व्हाट मैसेज ही विल गो बैक टू हिज कंट्री? अरे तोबा तोबा, कभी गलती से भी हैदराबाद नहीं जाना बोल के ही विल टेक बैक द मैसेज.
Now you can think whatever he may take back the message. हमारे को क्या हो रहा, नाकेम అవుతుంది. A company CEO taking wrong feedback from visiting Hyderabad, his friends would be CEOs of other companies. If he takes such a message that Hyderabad traffic situation is worst, people do not follow any traffic rules, will any multinational come and set up an office in Hyderabad? Now you can ask me, वाह मेरे को क्या जाने का है, मल्टीनेशनल कंपनी आने दो नहीं आने दो, आपको कुछ असर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ता ना? आप पढ़ने के बाद क्या करना चाह रहे हैं आप? जॉब किस में करते? मल्टीनेशनल कंपनी में ना, सॉफ्टवेयर एप्स पूरा बच्चे पूरा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं ना. तो अगर कंपनीज नहीं है तो इधर अपने को रोजगार नहीं मिलेंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगे, फिर अपन पेट पकड़ के दुबई अमेरिका इधर उधर जाके काम कर लेना पड़ता. Companies, if companies are set up in Hyderabad, then we can have good jobs here only, we can have good salaries here only. So the only message which we can give to a foreign national, directly or indirectly, we can give a good message by following traffic discipline. Do you agree with me? Right. Only the foreign nationals will see how disciplined we are in traffic and what about our sanitation. Sanitation is how we dispose the waste. केल का छिलके रोड पे फेंक दिए, बिस्किट का पैकेट रोड के ऊपर फेंक दिए. दिस इज व्हाट एनी सिटीजन विल ऑब्जर्व. ये ऑब्जर्व करने से the brand image of Hyderabad will be ruined and no more companies will come to Hyderabad. We got jobs, we will retire sometime, we will go. We don't have any loss regarding this. The only loss which is faced by you, the future upcoming nation. మీకే లాస్ అవుతుంది. అది కంపెనీస్ ఇక్కడికి రాలేదు అంటే జాబ్స్ ఇక్కడ ఉండవు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. कोविड टाइम में देखे ना, मम्मी और डैडी कोई मर गए तो भी स्काइप में नहीं तो जूम कॉल में देख लेना पड़ा. कोविड के टाइम में है ना सब लोग. You were somewhere around 8th class or 9th class during that COVID period. Am I correct? Now you are automobile vocational first year, I think. Right. So, by this short, I want to tell is the message which is being given to a foreign national is only by following traffic sense and by following sanitation we can give a good message to foreign national, by which more companies will come to Hyderabad and you will get a good employment over here. Now coming to our session. Right. Just assume that there are only 10 people living in an island. आप सिर्फ एक 10 आदमी एक आइलैंड में जी रहे. नो नीड ऑफ रूल्स. किसी वो आइलैंड में एप्पल का झाड़ है, अनार का झाड़ है, केले का झाड़ है, फ्रूट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट आइलैंड. एनीवन कैन टेक व्हाटएवर दे वांट. Why anyone can take whatever they want? Because there are only 10 people living on the island. Next. If the island has become populated like Hyderabad, now 10 lakh people are living in Hyderabad. Just assume that 10 lakh people are living in island. On the island, can anyone take whatever they want from the island? If it is allowed without any rules, only the person who has the power or who has the might will get the apple. The person who is lean and the person who is weak will not get an apple. जिसके पास दम है उसको सब कुछ मिलता, जिसके पास दम नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता. Now the situation of Hyderabad is like this. It has become populated. The population of Hyderabad is 1.2 CR, 1 crore 20 lakh population. And in that population, 89 lakhs are vehicular population moving in the city of Hyderabad. How many vehicles are moving in city? 89 lakhs. Now this island has become a populated city and vehicularly populated city. Now just tell me, if no one follows the traffic rules, if they park their vehicle wherever they want, can everybody move to their destination? Can everyone go to their place? No. That's why the rules have been framed in India or in any country depending upon the population and the vehicular population. Next.
This is the population, 1.2 CR is the population, 650 square kilometers is the area of Hyderabad. The data is old, about 6 months back. I am telling you the updated data. 89 lakhs are the vehicular population. Next. Next. Right. तो इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, ये आइलैंड और ये जगह ये छोटा हो गया और इतना ही चाहिए. इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहने से व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव फ्रेम्ड ए रूल्स बुक फॉर आवरसेल्फ. व्हाट इज द बिगेस्ट रूल्स बुक इन इंडिया? Constitution is the biggest rules book in India. Who wrote it? Ambedkar is the draft committee chairman of the Constitution. When you open the book, Constitution book, you find a page called preamble. In the preamble, the first 2 lines states that we the people of India. The preamble starts with we the people of India. हम ऐसा मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वास्ते लिख लिए एंड इट कंक्लूड्स विथ वी गिव इट टू आवरसेल्व्स. अब बोलिए मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखे? अपन ही लिख लिए. अपन लिख के किसको दिए? अपन को ही समर्पित या अंकित कर लिए. द रूल्स बुक इज रिटन बाय अस एंड गिवन टू आवरसेल्फ. And if we do not follow the rules which is written by ourselves and given to ourselves, इससे बड़ा जोक कुछ भी होता क्या? Rules book is written by us. We the people of India wrote on so and so date and we give it to ourselves बोल के लिख लिया उसपे. We wrote the constitution book, rules book and we gave it to ourselves and unfortunately no one is following the rules which is written by us. ये हास्यास्पद होगा नहीं तो जोक होगा. अपन लिख लिए सो रूल्स बुक, एटलीस्ट वी हैव टू फॉलो. नेक्स्ट. नेक्स्ट. राइट. अगर अपना ट्रैफिक सेंस मैं बोला ना, पीवीएनआर एक्सप्रेस से उतरने के बाद मेहदीपट्टनम आते ही ऑल टाइप ऑफ वायलेशंस विल बी विजिबल. ट्रैफिक में कितने वायलेशंस होते बोले तो मेहदीपट्टनम में ठहरा करे तो बस है, उसको सब कुछ देख ले सकते. ऐसा वायलेशन करे तो फॉरेन नेशनल व्हाट वी कॉल व्हाट दे विल कॉल अस, दे कॉल अस एज अनसिविलाइज्ड सिटीजन्स. अनसिविलाइज्ड, अनागरिका. आई डोंट नो द एक्चुअल वर्ड इन हिंदी. अनसिविलाइज्ड को क्या बोलते बोल के, अनसिविलाइज्ड बोले तो आपको समझ में नहीं आया ना? समझ में आया नहीं आया? అన్సివిలైజ్డ్ అనాగరిక సిటిజన్స్ అనుకుంటారు అన్నమాట. సరే వాళ్ళు అనుకుంటే అనుకోనండి, లెట్ దెమ్ టెల్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. ఆర్ వి రియల్లీ అన్సివిలైజ్డ్? No. About 4,000 years back in Harappa and Mohenjo-daro civilization only, we made the country or we made the universe learn how to construct a house, how to make a drainage system, how to keep windows, how to befriend an animal like cow or a dog for cultivation, how to store food grains, how to cultivate, how to preserve. Everything we did in 4,000 years back in Harappa and Mohenjo-daro civilization. Did you study this topic in 8th or 9th social? Right. Is in Indus Valley civilization only, the civilization was practiced in 4,000 years back in India, and we made the universe learn about civilization. कैसा जीना, कैसा पकाना, कैसा घर में रहना बोल के हम सारे दुनिया को बताए और सारे दुनिया आके अपने को अब क्या बोल रहे? इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड और हैदराबादी सिटीजन्स आर अनसिविलाइज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ अवर लैक ऑफ ट्रैफिक सेंस एंड लैक ऑफ सैनिटेशन. डू यू एग्री? राइट. एंड अबाउट 400 years बैक, आजकल बच्चे पूरे बीटेक पढ़ के एमएस बोल के यूएस को चले जा रहे हैं. एमएस इन यूएस इज अ पैशन ऑफ द डे नाउ. आपके घर में भी बड़े भाई बहन कोई तो भी रहते होंगे ना, बीटेक करने के बाद एमएस के वास्ते यूएस चले जा रहे हैं. अबाउट 400 years बैक देयर वर यूनिवर्सिटीज इन बिहार. नाउ बिहार, Nalanda and Takshashila were the universities. In those universities, 10,000 students from all over the world used to come and study in India. The modern medicine, the modern physics, the modern mathematics, everything was invented by Indians and taught to the nation. Now tell me, are we uncivilized? We are very much civilized and now being called as uncivilized just because of lack of traffic sense and sanitation. Do you agree with me? Yes. Right. Next. 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 Next.
Next. Right. Without speaking much about the data, I am directly coming to the topic or the violations which students intend to make. How many are you are above 18 years in this classroom? Students, 18 years. Very few. Very few. Less than 10 or 20 or less than 18 years. When a driving license is issued, after attaining or after completing 18 years only driving license is issued. Do you have driving license? All those who have raised their hands? Do you have driving license? Right. Without having a driving license, no one is permitted or allowed to drive a motor vehicle in any public place. Where from I bought this rule? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लिखे गए मोटर व्हीकल एक्ट में लिखे गए हैं 18 साल के नीचे जो भी है वो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस नो वन शुड ड्राइव ए व्हीकल अगर आपको 16 साल है तो भी आप गाड़ी चला सकते यू कैन ड्राइव विथ 16 इयर्स बट मोटरसाइकिल विदाउट गियर बगैर गियर वाला मोटरसाइकिल चला सकते वो 16 साल का लाइसेंस आपको होना बोले तो आपका पेरेंट का कंसेंट और दस्ताक्षर उसमें मैंडेटरी है पेरेंट साइन इज कंपल्सरी फॉर टेकिंग द लाइसेंस ऑफ 16 इयर्स एंड यू कैन ड्राइव ओनली मोटरसाइकिल विदाउट गियर एंड दैट टू लेस देन 50 सीसी 50 सीसी के अंदर के गाड़ी आप चला सकते 16 साल वो भी लाइसेंस लेके 18 साल के बाद ही आप गाड़ी चला सकते రైట్ వెంకటేష్ దగ్గరికి అది అల్మారి ఓపెన్ రైట్ షాల్ nowadays how many of you are having mobile షాల్ everyone good everyone is having a mobile and we are habituated to mobile एक 10 मिनट के बाद फोन को ऐसा कर लेके ऐसा नहीं देखे तो कुछ we think that we are missing something फेसबुक सब कुछ देखते हैं आप लोग व्हाट्सएप यूट्यूब राइट ओके हु इज द इन्वेंटर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग he answered in an interview he was attending an interview and someone asked him sir why do you wear only dark blue pant and sky blue shirt every time and all the time Mark Zuckerberg wears always dark blue pant and sky blue shirt every time and all the time काई को उसके पास पैसे नहीं है एक ही ड्रेस है उसके पास can anyone tell me what the reply he said he replied like this डेली क्या जूता पहनना क्या पैंट पहनना पैंट के ऊपर क्या मैचिंग शर्ट पहनना उसको टाई क्या पहनना बेल्ट क्या पहनना शूज क्या सॉक्स क्या हैंडकरचीफ क्या इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं The reply Mark Zuckerberg gave is he don't want to waste time thinking of what dress he has to wear every day. So he fixed up a uniform for him, dark blue pant and light blue shirt. You can Google and see also this. Now my question is how much time we are wasting with the Facebook which he invented? How much time we are wasting with YouTube? How much time how we are wasting with the reels and all the content in the phone? At least 4 to 5 hours a day? Easily time 4 to hours the children are wasting their time. Please don't waste your precious time. Actually, I don't share my personal experience everywhere, but seeing the audience here, I got to remember my childhood. I used to study like this only in government colleges, so I want to share my experience. After passing my SSC in the year 1993, April 14th या 15th ऐसा लास्ट एग्जाम हो गया SSC का इधर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है चौरस्ता पे मालूम है ना आपको सबको
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में समर कैंप चलता, पेपर का वैल्यूएशन कैंप चलता, साहब जैसा बड़ा लोग लेक्चरर्स पूरा उधर पेपर वैल्यूएशन करने के वास्ते आते। वो पेपर वैल्यूएशन के वो कैंप में बच्चों को पेपर बॉयज की तरह लेते, पर डे 30 रुपीज बोल के पेपर बॉय बोले तो वो बंडल पकड़ के लाके वो लेक्चरर साहब को कट करके वो बंडल उसको देना। वो साहब पेपर वैल्यूएशन करने के बाद पूरा अटेंडेंस शीट ऊपर रख के फिर पैक करके स्ट्रॉन्ग रूम में रख देना। दिस इज द वर्क ऑफ ए पेपर बॉय। After just appearing my SSC exam in the year 1993, April 14th or 15th, I joined as paper boy in Nampalli Board of Intermediate. I worked for 30 days over there. The camp will be around somewhere 30 to 40 days only. I got my first salary 900 rupees. After coming out from SSC without getting the results also, I worked as a paper boy, and subsequently in the year 2015 when I was the inspector Nampalli, I attended Board of Intermediate as chief guest. Here seeing you all, most of the children I see are just like my family background, coming from rural community or poor community. What you have to do is, please don't waste your time. Do whatever work you get. कोई भी काम करना गलती नहीं है, कोई भी काम करना छोटा बड़ा ऐसा काम कुछ भी नहीं रहता। For getting your books, for going for next education, for your higher education or for your tuition fees, कुछ तो भी काम आता। Do anyone work as part time? Very good, very good. By seeing the audience, I want to share this because all are just related to me and coming from same the background which I have came. Right. Coming to our topic, cell phone driving. ये सेल फोन बहुत यूज कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। सेल फोन यूज करने से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। गाड़ी चलाते वक्त हम रोडों के ऊपर देखते तो ऐसा रह रहे फोन, ऐसा फोन पकड़ के ऐसे ही चला रहे गाड़ी। Either car or two-wheeler, their phone is hanging, or else they are using Bluetooth or headphones and they are driving with using the mobile. Using mobile while driving is very dangerous. You can ask me, I can drive by using mobile also, I am comfortable. But there are three types of distractions which are being done when you are using your mobile. The first one is manual distraction. आप दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ना है। 10 o'clock and 2 o'clock डायरेक्शन बोल के ड्राइविंग सिखाते आपको, फोर व्हीलर सिखाते वक्त अपना वॉच का 10 o'clock 2 o'clock डायरेक्शन में स्टीयरिंग पकड़ के आप गाड़ी चलाना चाहिए। एक हाथ में फोन आ गए तो क्या हो गया? मैनुअल डिस्ट्रैक्शन। दो हाथों से पकड़ने वाला स्टीयरिंग आप सिर्फ एक हाथ से पकड़ रहे, द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन। Second one is manual distraction and the second one is visual distraction. You have to, two eyes should be on the road only while you are driving. आप गाड़ी चलाते वक्त आपके दोनों आंख रोड के ऊपर होना चाहिए। फोन आते ही आप ऐसा हो गए, आपका आंख किधर आ गया? फोन के ऊपर आ गया। दिस इज विजुअल डिस्ट्रैक्शन। एंड द थर्ड वन इज आप फोन उठाए, अरे यार सीढ़ी मर गया बोल के फोन में मैसेज आए, एकदम अचानक, एकदम पैनिक, अरे फिल्म स्टार श्रीदेवी मर गया क्या? अरे ऐसा कैसा हो गया? दिस इज कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। आपका योर माइंड शुड बी ऑल्सो ऑन द रोड। यू शुड बी अटेंटिव व्हाइल ड्राइविंग। यू शुडंट थिंक एनी अदर एल्स व्हेन यू आर ड्राइविंग द व्हीकल। बट आप फोन यूज करते ही कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। So these three distractions will lead you to accidents. These three distractions are the major causes which contribute with using mobile while driving, and this will lead to road accidents. As sir said rightly first, youth are the major victims in road accidents. हमारे पास डेटा रहता है, कितने लोग मर जा रहे, उसका उम्र क्या है, क्या पढ़ रहे, क्या कर रहे बोल के हम डेटा मेंटेन करते। मेजॉरिटी ऑफ द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स जो मर गए उसका उम्र होगा 20 to 35 ओनली। द पोटेंशियल यूथ, द फ्यूचर ब्लॉक्स ऑफ द नेशन और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन आर शेडिंग ब्लड ऑन द रोड्स and dying. Why? Just because of human errors which they are doing while driving. Next.
ट्रिपल राइडिंग, दिस इज पैशन फॉर यूथ। अगर पुलिस पकड़े तो आपको ऐसा लगता है मेरा गाड़ी है, 3 नहीं तो 30 आदमी बैठते, इसको क्या जा रहा। पीपल थिंक लाइक दैट। आप भी ऐसा चलाए तो आप भी ऐसे ही सोचते, हमारा गाड़ी है, माई खरीदे उसे है, मेरा पापा मेहनत करके मेरे को गाड़ी खरीद के दिए, 3 आदमी बैठते नहीं तो 20 आदमी बैठते, इसको क्या जा रहा है, इसका उसका क्या उखाड़ा क्या, हम ऐसा सोचते। बट वाई वी शुड नॉट ड्राइव इन ट्रिपल्स, ए 2-wheeler इज फॉर 2 नॉट फॉर टू मेनी बोल के काय को बोलते। अगर आप ट्रिपल राइडिंग जा रहे, द व्हीकल इज बीइंग ओवरलोडेड, द व्हीकल इज बीइंग ओवरलोडेड। ट्रिपल्स जाने से गाड़ी ओवरलोड हो गए। ओवरलोड होने से क्या होता, एक्सेलरेटिंग कैपेसिटी रिड्यूस होता व्हीकल को, गाड़ी जितना स्पीड जाना उतना स्पीड नहीं जाता। अच्छा ही है ना, स्पीड नहीं गए तो एक्सीडेंट नहीं होता ना, स्पीड नहीं गए तो भी एक्सीडेंट होता। मैं बोलता हूं अपन ही ऐसा जा रहे, एक बस इधर है, बस को ओवरटेक करना चाह रहे, सामने से लारी आ रहा, अपन जब 2 जा रहे, सिंगल जा रहे, आई कैन इजीली पिकअप टू 80 and 90 एंड आई कैन जस्ट ओवरटेक। आप भूल जाते हैं कि आपका गाड़ी ओवरलोडेड है, ट्रिपल राइडिंग है, आप ओवरटेक करना चाह रहे, उसका एक्सिलरेटिंग रिड्यूस होके ओवरटेक नहीं कर सकते, सामने लारी आके मार देते। रिडक्शन इन स्पीड इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन ट्रिपल राइडिंग। नेक्स्ट, ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन यू ओवरलोड ए व्हीकल। अगर अपन इधर ब्रेक लगाए तो 20 मीटर जाके गाड़ी रोकेगा, ब्रेक जिधर लगाए उधर ही रुक जाता क्या गाड़ी, नहीं, थोड़ा आगे जाके रुकता, वो थोड़ा इंक्रीज होता। मैं साहब को देखा, इधर ब्रेक मारे तो उधर रोकता बोल के मैं ब्रेक मार दिया, लेकिन आई एम ड्राइविंग ट्रिपल, ओवरलोड कर दिया, थोड़ा इंक्रीज होता, क्या होता, I will meet with an accident or a congestion point arises and accident happens. And triple riding करने से गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता। This is most important. Triple riding करने से गाड़ी का बैलेंस भी नहीं रहता। ये 3 वजह है जिसके कारण रोड के ऊपर ट्रिपल राइडिंग करने से एक्सीडेंट्स होते बोल के हम लोग बोलते हैं। So that is the reason why never and ever drive in triples. हम पकड़े तो पुलिस वाले कोई ट्रिपल राइडिंग या सेलफोन ड्राइविंग ऐसा पकड़े तो पुलिस वालों को बोलने के वास्ते एक रेडी कहानी रहते, हम केसेस लिख रहे तो पहले बच्चों को पकड़े तो क्या निकालते वो लोग, హాల్ టికెట్, ఎగ్జామ్ సార్ అర్జెంట్ పోతున్నాం సార్, తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి సార్, हॉल टिकट। తర్వాత नेक्स्ट अम्मी अस्पताल में है, बॉक्स देने के वास्ते जा रहे। इसमें कितना सच होते कितना झूठ होते मेरे बाल देखे तो आपको पता चल, ये झूठे बातें सुन के 40 साल में मेरा बाल पूरा सफेद हो गया। So never take any plea or any reasons like this. Never ever drive in triples because it is very dangerous. Next. Right. ये व्हीलिंग करना, स्टंट करना और गाड़ी के पीछे निकले थे क्या बोल के, मेरा बाप का रोड है, नहीं देख रहे क्या रोड के ऊपर, किंग ऑफ द रोड मेरा बाप का है। ओके, वी डू एग्री दैट यू आर किंग ऑफ द रोड, वी एग्री, वी डोंट रिग्रेट और वी डोंट हैव एनी ईगो टू adjust that you are believe that you are king of the road, we do agree that you are king of the road, but first do wear the crown। king को क्या रहता, क्राउन रहता ना, where is your crown, first wear the crown, we agree that you are king of the road, आप राजा है रोड के, लेकिन पहले तो क्राउन पहनो, then we do agree that you are king of the road। ये व्हीलिंग करना, स्टंट करना, ये पूरा पैशन की तरह दिखता। आप आपको याद होगा साई धर्म तेजा बोल के एक फिल्म एक्टर था, उनका एक्सीडेंट सुना क्या,
TV9 में कंटिन्यूस 3 दिन आया, अब भी साई धर्म तेजा अपना दाहिने हाथ खोला, एक इडली खाया, साई धर्म तेजा वॉशरूम को गया, उनका अच्छा हो जा रहा, ऐसा बोल के स्क्रोलिंग्स आते गए, 3 दिन तक स्क्रोलिंग्स आते गए। What was the mistake made by him? What was the mistake made by Sai Dharam Teja? His vehicle is a 1000cc vehicle, over speeding vehicle. Okay, good. It is a racing vehicle. Racing vehicle कहां पर चलाना? रेसिंग फार्मूला 1 ट्रैक है ना, वहां जाके चलाना। आपका गाड़ी स्पीड जा सकता, लेकिन what you have to think is whether the road is worthy of the speed or not. Road should be worthy of the speed which you are driving. ORR पे कितना स्पीड जा सकते हैं आप? 100 and 120. Road is worthy of the speed. You can go at such speed. అజరుద్దీన్ కొడుకు, తర్వాత కోట శ్రీనివాసరావు సార్ కొడుకు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి సార్, नारायण చాలా మంది बड़े बड़े गाड़ी ले रहे और ये नहीं सोच रहे कि whether the road is worthy of the speed or not. You can do this type of stunts, but where? सर्कस में। सर्कस में नहीं तो एग्जीबिशन में एक रहता, हम बचपन से देखते थे, कुएं रहता, उसमें गाड़ी ऐसा फिरा, हाँ, मौत का कुआं, राइट, उधर ऐसा काम कर सकते। आपको करना है तो यू कैन गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड विद अ ट्रेनर एंड देयर यू कैन डू, बट नॉट ऑन द रोड्स. इट इज डेंजरस टू यू एज वेल एज अदर्स. नेक्स्ट 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 राइट. माई हेलमेट के बारे में बोले ना, यू आर द किंग ऑफ द रोड बट वेयर द क्राउन बोल के. Why you have to wear helmet? Not only wearing helmet is important, helmet पहनने के बाद you have to wrap the chin belt also. कई को बोले तो एक्सीडेंट होने के ऊपर आप गिर गए तो पहले हेलमेट गिर जाता और बाद में सिर जाके रोड को नहीं तो पत्थर को लग जाता. Many a number of road accidents, victims died due to head injuries only. Head injuries are more critical. So always do wear a helmet and wrap the chin belt also for your safety. हेलमेट रहता, सबके पास रहता, लेकिन कहाँ रहता? पेट्रोल टैंक के ऊपर, नहीं तो पीछे कैरियर, वो पुलिस वालों के वास्ते. जंक्शन आ रहे पुलिस वाले हाई बोले तो ऐसा रखते, जंक्शन निकल गए बोले तो फिर निकाल के पेट्रोल टैंक के ऊपर रखते. Always do wear a ISA standard helmet and wrap the belt also for your safety, because head injuries are very critical and many a number of people die due to head injuries. Next. 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 Right. Never ever drink and drive. I don't think anyone drinks here. All are very small children. But to educate your parents and relatives, I am talking about this topic. Actually, what is this? Cat. A cat क्या करा? 2 पेग मार लिया. Saturday night एक 2 पेग मारा. 2 पेग मारने के बाद आईने में देखे तो उसको क्या दिखने लगा? After consuming alcohol, cat will assume itself as tiger or lioness. This high spirit is the major cause of accidents. दारू पीने के बाद मैं जितना भी स्पीड जाऊं उतना जा सकता हूं, मेरा गाड़ी मेरा कंट्रोल में रहता. These are the influences of spirit or alcohol which is in your body. So the cat assumes herself as a tiger and drives, and it meets with an accident. Next. Right. Once if a person is intoxicated or consumes alcohol, what happens? After consuming alcohol, the first thing is brain responds slowly. जो brain respond करना है ड्राइविंग में, it should give message in fraction of seconds and you have to adjust yourself. Either you have to maneuver your vehicle or you have to gear down or you have to apply the clutch or brake or accelerator, whatever it is. Brain should function promptly while you are driving. दारू पीने के बाद क्या होता? Brain will respond slowly, धीरे काम करता, slow motion में काम करता. Eye vision blurred. Eye vision blurred बोले तो
दो आदमी चार की तरह, एक आदमी दो की तरह ऐसा दिखाई देने लगते हैं। सामने से कावेरी ट्रेवल्स का बस आ रहे तो दो टू व्हीलर आ रहे, मैं बीच में से जाता हूं, देखो बोल से जाता, किधर जाता? दिस इज आई विजन ब्लड। एक दो की तरह, दो चार की तरह, बस आ रहे तो टू व्हीलर की तरह, टू व्हीलर आ रहे तो बस की तरह, ऐसा दिखाई देने से एक्सीडेंट्स होता। माउथ स्पीच डिस्टॉर्शन, जो आदमी असल बात ही नहीं करता लेकिन दो पेग मारने के बाद इंग्लिश फ्रेंच सब कुछ बात करता। एक कार ऐसा चलाते हुए पीछे आदमी से पलट के कोई आर्ग्यूमेंट, फिल्म के बारे में आर्ग्यूमेंट, कुछ हीरोइन के बारे में आर्ग्यूमेंट, हीरो वो सलमान खान ऐसा करा, शाहरुख खान ऐसा करा, ये आर्ग्यूमेंट्स में ऊपर क्या होता, ऐसा पलट के बात करता। पहले ही इसका दिमाग स्लो रेस्पॉन्ड हो रहा, इसका आंख ठीक से दिख नहीं दे रहा और पीछे पलट के आर्ग्यूमेंट कर रहा। बाप बोलिए मेरे को दारू पीने के चलाने से एक्सीडेंट होता नहीं होता? बराबर होता। एंड फोर्थ वन इज आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, हैंड्स एंड फीट, प्लीज मेंटेन साइलेंस। हैंड्स एंड फीट विल बी वीकेंड। उनको अगर एक बॉटल को ऐसा उठाना है तो मैं ऐसा उठाया ना, पीएसओ आदमी भी उठाता लेकिन ऐसा 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 करके ऐसा उठा। अब देखते ना, पी के रोड के ऊपर सोते रहते, उसके मक्खी उसके मुंह पे है तो भी कैसा स्लो मोशन में मार देता, ऐसा ऐसा फास्ट ऐसा नहीं मार लेता। कई को बोले तो उसका हैंड्स और फीट उसका कंट्रोल में नहीं रहता। ये चार वजह है वन शुड नॉट ड्राइव इन ए ड्रंकन स्टेट। Whenever your father or parents, चिच्चा मामा कोई तो भी दावत में गए, अगर पी के चला रहे तो you have to tell them all these reasons and you have to ask them, let us take an auto and go home, let us book an Ola cab or go home। आप नहीं चला सकते, अगर आप चलाए तो हम लोग नहीं आते बोल के चाबी खींच लेना, उसको चलाने नहीं देना। Why? Because today you learned that drunken driving leads to accidents. Do you agree with me? Right. Next. एक बार play करो। This is a normal driver, applies brake and he stops at prompt. His delay action is due to delay in taking decision and it meets with an accident. Here the first one is a normal driver. He applies brake. The second one is a drunken driver. He will also apply brake, but his brain responds slowly, his hands and feet are weakened, so a little bit delay in applying the brake. A little bit delay in applying brake will compulsory lead to an accident on the roads while you are driving. So never ever drink and drive, and never allow your parents or relatives to drink and drive. Next. Right. These are some ill effects on health by consuming alcohol. दारू पीने से लिवर खराब हो जाता बोल के एक सिनेमा में बोले अमिताभ बच्चन साहब, या मेरे को याद नहीं, कोई देखे क्या? शराबी बोल के एक सिनेमा है, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता बोल के बोलता। That's what we are telling. Consuming alcohol damages to liver. Liver is the only regenerative organ in human body. इसको कुछ लिवर को कुछ हो गया तो थोड़ा कट कर दिए तो it will regenerate. Such a beautiful organ. The only regenerative organ in human body is the liver, and if one consumes alcohol, liver will be affected by cirrhosis and ultimately leads to death. उतना अच्छा रीजनरेटिव ऑर्गन भगवान अपने को दिए तो अपन क्या कर रहे हैं, उसमें अल्कोहल और स्पिरिट डाल के मौत को इनवाइट कर रहे हैं। डैमेज टू द हार्ट, 20 साल वाले 25 साल वाले आजकल हॉस्पिटल को जाके स्टंटा लगा के आ रहे, हार्ट अटैक ये हो गया बोल के। वाई? बिकॉज ऑफ बाय कंज्यूमिंग अल्कोहल द मसल्स आर बीइंग वीकेंड। डैमेज टू द स्टमक को अल्सर्स ऐसा होते दारू पीने से और जंक फूड खाने से। सो नॉट ओनली ड्राइविंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल इज डेंजरस हेल्थ वाइज ऑल्सो। नेक्स्ट goes. Right. Many of you are very young and less than 18.
you might be thinking that ये सब हमारे को कहीं को बोल रहे, हमारे को रोड सेफ्टी के क्या जरूरत है बोले तो, though you are not driving, Gauss previous sir. आजकल बच्चे पूरे रोड के ऊपर चलते हुए दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द क्लाउड. ये फोन ऐसा लगा रहे, नहीं तो हेडफोन लगा रहे, नहीं तो ब्लूटूथ लगा रहे, और नहीं तो यूट्यूब का वीडियोस देख रहे, नहीं तो रील्स देखते हुए रोड के ऊपर चल रहे. यूजिंग मोबाइल इज डेंजरस while driving, yes, but using mobile while walking is also dangerous. You can't hear the traffic, oncoming traffic. You can't, अगर आपके पीछे से गाड़ी आ रहे, हॉर्न मार रहे, तो भी आप सुनने की स्टेज में नहीं होते. Why? Because you are plugged with the headphones and all that. So using mobile while walking is also dangerous. Never use mobile while walking. Next. Right. Minor driving. मैं बोला ना, 18 साल के नीचे जो भी गाड़ी चलाए तो आपको फाइन होगी, और जो आदमी आपको गाड़ी दिया, whether he may be your parent or guardian, he will also be booked in the case for allowing you to drive by giving his vehicle. Driving at a minor stage is an offence as per law, and allowing unauthorized person to drive his vehicle is also a crime. आप माइनर होके गाड़ी चलाए तो आपको फादर को भी केस में लाया जाएगा. ये फाइन से खत्म नहीं होता, एक कोर्ट में लेके जाके पेश करते माइनर ड्राइविंग को, बच्चे को और उसका पेरेंट को. उधर फाइन हो सकता, जेल हो सकता, कुछ भी हो सकता. So please do not drive before attaining 18 years and before taking a valid driving license. I hope no one comes on vehicle to this college. No one comes? Few come? Okay. Please obtain a valid driving license, then only you are allowed to drive the vehicle. And I request the management also, without driving license, please don't allow them from the gate, sir. Right. Next. Next. And lastly, we drive the way we want. The others drive the way they want. And ultimately, आप मनमानी, आप जैसा चाहे वैसा गाड़ी चलाए तो क्या होता? Ultimately लास्ट एक्सीडेंट में. एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने के बाद अरे ऐसा होता बोल के मैं नहीं सोचा था, ऐसा नहीं होना था, ऐसा कई को हुआ, ये पूरा सिनेमा डायलॉग्स होते, बेकार है. All these mistakes are the human errors which we have been taught within this small time frame. Please do follow these rules and do follow the traffic rules for your safety and also for the safety of others. With these few words, I thank the management, the principal sir and others. Day before yesterday also we celebrated Constitutional Day and conducted constitutional quiz on the big screen. So we should feel proud and you should discuss with your family and friends about what is going in our college. हम किसी से कम नहीं और ज्यादा है. No corporate private college gives such a wonderful quality education. We are intended to develop our all-round personality, all-round development of the students. That's why we are not concentrating only on question answers and getting marks, ranks. We are imparting all-round knowledge. So this is called true personality. पर्सनालिटी बोले तो काले क्वेश्चन आंसर्स मार्क्स नहीं. बुकिश नॉलेज इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन. दैट इज नॉट सफिशिएंट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन. What personality includes? It is collective of 5 domains. It includes 5. Physical domain, mental, intellectual, emotional, spiritual.
Panchakosha Vikasam. So unless you develop all these 5 domains, you will not be getting personality. So it has become a usual word, personality development, personality development. People used to spend thousands, lakhs of rupees for personality development classes, but nobody knows what is actually what is a real personality. So in our college, we are concentrating in all the domains. We have wonderful ground. So physical fitness will be there, and also we are conducting debates, quiz, extension lectures. We are inviting eminent persons. As I told you, education is inspiration. Today, by seeing our wonderful inspector, please put your hands, what a wonderful lecture. Really, sir. Hats up to Harish. You might have heard triple IT. Triple IT, सुने ना? So today's program, I call it a triple IT, sir. It is innovative, it is informative, and it is inspiring also. So wonderful words, thank you Harish sir. It is almost triple IT, very innovative way, into humorous and lot of information also there. Information, only information we get bored, but he added something flavor, humorous, everything into this. So it made very interesting, inspiring, innovative, and above all very useful information. Harish sir, so remember all these things. I think it would be very useful if you give the same PPT. We will pass it on all the students so that they can watch, and their families, friends also watch it. Every word, every slide is very useful. So nothing is precious than our life. So it is meant for to protect our lives. ప్రాణం కంటే విలువైన ఏమీ లేదు. మన ప్రాణాన్ని బతుకుంటే చదువు తర్వాత విషయం, फर्स्ट बतूंगा वी हैव टू लिव, जीना है, बाद में कुछ कर सकते. सो जीने के लिए ये बहुत जरूरी है टू फॉलो सर्टेन रूल्स. एंड ही आल्सो टच्ड द ग्रेट एंशिएंट हेरिटेज, इंडियन प्राइड. सो वेरी वेल executed Harish sir. Really it is a wonderful program. Every student and faculty also enlightened. Definitely it is very useful. So morning we find hundreds of bikes there, but in our college our students are very good. They are bearing the burden of the family, and we are proud of our students. They are earning, they are working for the family, sir. Really, हम बहुत खुश है बेटा. Majority of the students work for the family. We also same we relate, as Harish rightly pointed out. As a student, we used to work for the family. So just like you are also working, it is a pride moment. At the same time you are studying, you are building your career, and you are helping your family. We are proud of you, my dear students. Don't let this legacy. You have to build your career also. Don't forget, काम करना, पढ़ना, बड़े आदमी बनना. ये नहीं बोलना काम कर रहे हैं बोल के. Don't compromise on your career. Okay. సార్ కూడా అది మనకి బుక్స్ ఇచ్చినాక చేద్దాం. సార్కి సార్కి ఇది చెప్తా నేను, సార్ చెప్తాడు. సార్ ఫెల్స్ వాట్ ఎవర్ టుడే హ్యాపెండ్, జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్
mind. ऐसे प्रोग्राम हम इफ योर कोऑपरेशन, इफ यू मेंटेन डिसिप्लिन, हम करते रहेंगे. सो मॉर्निंग में बहुत बाइक्स रहते, इवनिंग नो बाइक्स. दैट शोज योर कमिटमेंट. सो हमारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं. I worked more than 10 years in intermediate education as Rangareddy District Junior Lecturer Association President. I participated almost all activities of intermediate education. I used to inspect corporate colleges, sir. I want to share one experience what happened. नारायण का ये कॉलेज रहता ना कॉर्पोरेट चैतन्य, एक कॉलेज में गया मैं. वो कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा है, डोंट सेंड फीस विथ स्टूडेंट्स. I asked the principal, what is this? I saw beware of dogs, so many in front of houses. Just like that, what is this display? Why you displaying all these things? बोले तो क्या बोला, क्या बोलना साहब, बहुत गंदे बच्चे हैं पूरे. माँ बाप से फीस लेके आते मगर कॉलेज में पे नहीं करते, बाहर पूरा होटल में जाके पार्टी करके खत्म करते, पेरेंट्स को नहीं बोलते, फीस नहीं भरा बोल के. When we insist them to pay fees, these fellows go and bring some outsiders. So all they make nuisance. So from that onwards, when we contact parents, they told already we have paid fees बोल के बोलते. ऐसा बहुत कुछ nuisance बन गए. इसलिए हम क्या करें, don't send fees with students. देखो बच्चे ऐसा पेरेंट्स को पूरा बर्बाद करके, उनको एजुकेशन नहीं है, पूरा खराब हो रहे बच्चे. भाई बहुत पैसे वाले ऐसे कर रहे, कॉर्पोरेट में ऐसा हो रहा. मगर आवर स्टूडेंट्स माँ बाप को ये जॉब करके वर्क करके माँ बाप को फैमिली को पैसे दे रहे हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स. हम यही चाहते, हमारा बच्चे खूब तरक्की करना, अच्छा पढ़ना, अच्छे इंसान बनना, अच्छा कैरियर बिल्डअप करना. इसलिए वी आर ऑल वर्किंग फॉर यू, फॉर द बेनिफिट, फॉर द सेक ऑफ यू. नाउ इट इज टाइम, दे आर बिजी विद देयर प्रोग्राम्स. And I thank you on behalf of all our students, staff, everything. Harish and Bhupesh sir for coming forward, voluntarily distributing notebooks. I request Bhupesh sir go first. Sir तो नहीं, Bhupesh sir first. जैसे Bhupesh sir हो, sir भी ले ले मेरे కూర్చోండి. वो మాది డ్యూటీ సార్, మీరు బీయింగ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ సార్ ఏం డ్యూటీ లేదు. వాలంటరీ ఈస్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ సర్వీస్ ఫర్ ద సొసైటీ. Now I request Bhupesh sir to felicitate Harish sir. సార్ మీరు రండి సార్. ఫ్లవర్స్ కూడా సార్ కి సార్ మీరు రండి. అది వాళ్ళకు ఒక ఫ్లవర్ అని ఇప్పి ఇద్దరు వచ్చింది కదా బ్రదర్, మీరు కూడా రండి, జస్ట్ ఒక ఫ్లవర్ తీసుకోండి రండి. మీ సార్తోనే ఒక ఫ్లవర్ తీసుకోండి. ఇంకొకరు వచ్చిన ఒకరే సార్ సార్ ఈ సార్ నేమ్ సార్ గౌస్ సార్. గౌస్ గౌస్ ఇట్లా సార్, ఇట్లా వచ్చి మీరు మీ స్టాఫ్ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ సార్. థ్యాంక్ యూ ఓకే, ఒక మంచి చప్పట్లతో సార్ పేరు చెప్పండి.
మీరు చదువుకున్నారు ఇక్కడ? నేను భద్రక కాలేజ్, మలక్పేట్ గవర్నమెంట్ జూనియర్. నేను కాదు అసలు 81 లో ఐ వాజ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్. ఓకే. 81. And after that, I continued 1 year Malapalli ITI. Then I joined Kachur and degree. అటెండర్ ని తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చాను. అంటే మీ అట్లనే నారు టైం లేదు, మీరు ఇస్తా అంటే వాళ్ళను లక్ష్మణ్ అక్కడ ఇచ్చేసారు. అక్కడ లాస్ట్ ఇది సార్ కార్లో పెట్టేసి ఓకే సార్ మాట్లాడినాక పిల్లలకి ఇచ్చేసాను. Kanya.